मैं हर बार कहता हूं, बार बार आग्रह करता हूं, मुझे लगता है कि इस बार मेरे आग्रह को स्वीकार करेंगे। सर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है, लेकिन माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि हवाई किराए पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, कंपनियों पर छोड़ दिया गया है। क्या सरकार समाज के निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में सब्सिडी देने के लिए कोई योजना बना रही है, जैसे कि रेलवे या अन्य यात्रा के साधनों में दिया जाता है? अध्यक्ष जी, नागर विमानन क्षेत्र 1993 से समस्त रूप से एक डीरेगुलेटेड सेक्टर है और मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को और हाउस को भी सूचित करना चाहता हूं कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के आर्ग्यूमेंट है उसके आधार पर आज जो हमारे नागर विमानन क्षेत्र में 2014 में केवल 6 करोड़ यात्री होते थे, पिछले 9 वर्षों में ये संख्या बढ़ के 14.5 करोड़ यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। और इसका एक मुख्य भाग उड़े देश का आम नागरिक की योजना ही है, जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार के द्वारा दी जाती है ताकि उड़ान उन क्षेत्रों में प्रचलित हो जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन शहरों को नागरिक उड़ान मंत्रालय के नक्शे से ही मिटाया गया था। और ऐसे कई शहर हैं जहां प्रधानमंत्री जी ने स्वतः अपने आप इंटरेस्ट लेकर, रुचि लेकर ये संभव कर पाया है। उदाहरण के तौर पर उड़ीसा में झरसुगुड़ा का एयरपोर्ट, असम में रूपसी का एयरपोर्ट, राजस्थान में किशनगढ़ का एयरपोर्ट, ऐसे कई एयरपोर्ट्स हैं। कुल मिलाकर 76 एयरपोर्ट्स हैं जो उड़ान योजना में संभव हो पाए हैं उनका क्रियान्वयन, और उसी के साथ 1,30,00,000 ऐसे हमारे देश के यात्री हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी उड़ान में बैठकर सफर नहीं किया, केवल प्लेन को ऊपर से देखते थे। वो उड़ान योजना के तहत आज प्लेन में सफर करने के लिए संभव हो पाया है। ये प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हुआ है। और जहां तक हम लोग एयर फेयर्स की बात करें, पिछले बार मैंने ये भी सदन में सूचित किया था कि सीजनैलिटी के आधार पर एयर फेयर्स चलती है विश्व भर पर। लो सीजन होता है वर्षकाल के जुलाई से अक्टूबर तक, दशहरे के बाद हाई सीजन शुरू होती है और जनवरी तक, और उसके बाद दोबारा लो सीजन शुरू होती है। और आज हमारे जो एयर फेयर्स हैं वो फर्स्ट एसी के मूल्यांकन में ही पूर्ण रूप से कंपेटिटिव हैं। और उसी के साथ साथ हमारा अनुमान है कि 2030 तक जो आज 14.5 करोड़ यात्री हमारे हैं, ये बढ़कर 42 करोड़ यात्री इस देश में बनेंगे। 3 गुना ज्यादा ये क्षेत्र बढ़ेगा। ऑनरेबल मेंबर। सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार अपनी स्वयं के पूर्ण रूप से नियंत्रित सरकारी एयरलाइंस संचालन करने की कोई योजना बना रही है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? और सर, अभी आपने उड़ान योजना की बात कही, अभी अगल बगल आजमगढ़ के अगल में अयोध्या का आपने इतना भव्य एयरपोर्ट बना के उसको संचालन करा दिया, गोरखपुर का एयरपोर्ट बन गया, आजमगढ़ का एयरपोर्ट सर पिछले 2 वर्ष से बनकर तैयार है। सरकार इस एयरपोर्ट को कब संचालन करेगी, इसका भी जवाब माननीय मंत्री जी दें। अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदया ने दोनों बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। सरकार ने विनिवेश एयर इंडिया का भी किया है और यही चमत्कार देखिए, केवल एक नेतृत्व है जिसकी एक संकल्पता थी कि भारत को एक नए नागर विमानन क्षेत्र में हमें प्रवेश करवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ संकल्पता के आधार पर वो एयर इंडिया का विनिवेश संभव हो पाया है। और आप देखिए अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र में 2014 में केवल 400 प्लेन थे, वही एयर इंडिया के विनिवेश के बाद उसी कंपनी ने विश्व भर के इतिहास में सबसे बड़ा प्लेन का ऑर्डर, 470 प्लेन का ऑर्डर विश्व में डाला है, 250 बोइंग के साथ और 220 एयरबस के साथ। ये परिवर्तन आया है क्षेत्र में।
और जहां तक माननीय सांसद महोदय ने अपनी चिंता जताई आजमगढ़ के बारे में, मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आजमगढ़ आपकी चिंता नहीं है, आपकी चिंता के साथ साथ हमारी भी चिंता भी है। और आजमगढ़, श्रावस्ती और आसपास के एयरपोर्ट्स की अभी वर्तमान में लाइसेंसिंग की प्रक्रिया चल रही है। आप बिल्कुल चिंता मत करें, हम आपको आश्वस्त करवाते हैं। उड़ान योजना के आधार पर हमने एक रूट भी दे दिया है आजमगढ़ से लखनऊ के लिए, और आने वाले वर्ष में लाइसेंसिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उसकी शुरुआत भी की जाएगी। श्री ईटी मोहम्मद बशीर जी। मान्य सदस्यगण, सभी मान्य सदस्यों को 4.5 साल हो गए, तो मैं सभी मान्य सदस्यों से आग्रह करता हूं कि एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें एक मूल प्रश्न पूछा जाता है, एक सप्लीमेंट्री पूछी जाती है। उसकी हमने सबने पालना की और आप सब पुराने सदस्य हो गए तो इसकी पालना करें। ईटी मोहम्मद बशीर जी। Sir, with regard to the exorbitant ticket fare in the flights, Honorable Minister in his reply says that what best he can do is this. Ministry had consultation with the airlines and the representatives were advised to self-regulate and keep passengers' interest in the mind while fixing the rate in the aircraft. Sir, I am asking you, what kind of self-regulation they are doing, sir, except in like blood-squeezing kind of exploitation from the passengers. That's what they are doing, sir. You may give many advice, but how they are responding? Sir, you have to realize one thing. During the vacation period, holidays, and for treatment, for all these kind of things, people are coming from abroad. They are exploiting like anything, sir. There is no control. Government is washing their hand. Government says that they have nothing to do. So before this rule, there was another provision. That was there. In that act rules, it was allowed to interfere the government in price fixation. Now what is happening, sir? I wish to bring one thing to the notice of the Honourable Minister. That is the Parliamentary Standing Committee on Tourism. That committee report says, sir, you have to take note of it. The committee note that affordable air transport must be growth for India, tourism for India, which is presently reviving. The committee recommends that the ministry may advise suitable monitoring mechanism to keep a check on the sudden surge in the price during the festival season, holidays, and natural calamities and things like that. So I'm asking the government whether the government can say that we cannot interfere like that. Are you throwing this into the mercy of the companies, private companies? That's not fair. Government is repairable to taxpayers. I'm coming. Government, I'm coming to, sir. I'm coming to the one more point, sir. Regulatory mechanism. One thing. As per the present act, there is a provision that they can make a reasonable profit. That is not defined, sir. What is that reasonable profit you are saying? What is the definition of that? This is nothing but a vague statement like that. Kindly come forward to have a solution to this burning problem in the country now. अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीगणों से आग्रह करता हूं, जब मैं आपको बोलने दो तो फिर उनको आप समय क्यों दे रहे हो? ये तो व्यवस्था मुझे करनी है ना। सर हमारे कोई प्रश्न सर हमारे नहीं, वो बात ठीक है। इतना प्रश्न लंबा प्रश्न पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं सर, मैंने सोचा कि मैं बीच में ना टोकूं। सर हमारे मोहम्मद बशीर साहब बहुत सीनियर मेंबर, ही इज अ वेरी सीनियर मेंबर एंड समवन हु आई हैव नोन फॉर द लास्ट 20 years. I can very well understand his emotion, but I would like to state on the floor of this House that we must understand the situation in the civil aviation space. The first point I would like to make, and I would urge Speaker Mahoday, aapka thoda sanrakshan mujhe mile, thoda samay mile, is that civil aviation is a seasonal sector. You have high season and you have low season. From October till mid-Jan is the high season. After that comes a very low season until April, May when holidays start. And then again you have a high season till mid-June. And this is not limited to India alone.
This is a global phenomenon. Having said that, from our side, we have monitored fares. We have a tariff monitoring unit that looks at 60 routes randomly. We have this tariff monitoring unit looks at D30, meaning day 30 fares. If you buy a ticket in advance, day 15 fares, day 7 fares, 3, 2, and 1. There are two ways. If you do a booking in advance, there will be no high fares. But if you do a booking on the last day, then according to the reservation bucket designators, which is the RBD system, fares do rise as far as airlines are concerned. Having said that, I would like to place on record two facts. Fact number one, in the last 3 years, airlines have made losses of close to between 55,000 crores to 1,32,000 crores on an annual basis, all airlines together. COVID has completely destroyed the financial viability of airlines. Even in that environment, our airlines have operated on a very sustainable basis. The second point I'd like to make as far as Bashir Saab's statement is concerned is that when he talks about high fares, if you look at the data, and I'm willing to share that data with him, calendar year January 22 till October 22 and calendar year January 23 till October 23, apart from the month of January, across every month, there has been a decline in fares across most of the routes, keeping seasonality in mind. When there is seasonality, then the fares do go up. Because at the end of the day, Bashir Saab, I'd like to explain to you also, air turbine fuel is close to 40% of the operating cost of an airline. And ATF prices have gone from 55,000 rupees a kiloliter to 1,50,000 rupees a kiloliter. So if they've gone up 3x, and airfares have gone up nowhere in rationale to that. Today, ATF is down to 1,08,000 rupees a kiloliter, which is still close to about 2.5 times from where it was. So airlines are operating under very extraneous circumstances and still providing relief and travel to a majority of our population at reasonable cost. श्री जुएल ओराम, आप भी शॉर्ट में बोले, क्योंकि सर, उड़ान में 100 एयरपोर्ट सिलेक्ट हुआ था, उसमें राउरकेला का एयरपोर्ट 5 नंबर में था। राउरकेला एक इतना स्ट्रेटेजिक पॉइंट में है जिसमें से आपका ये जो हादसा हुआ उत्तरकाशी में, उसमें से हरकुलस प्लेन ने राउरकेला स्टील प्लांट का पाइप को एयरलिफ्ट करके लोगों को बचाया गया। उसी राउरकेला स्टील प्लांट में से कोरोना के समय में आपका ऑक्सीजन भी एयरलिफ्ट हुआ था। इतना स्ट्रेटेजिक और बढ़िया एयरपोर्ट होते हुए उस एयरपोर्ट का डेवलप क्यों नहीं हो रहा है उड़ान स्कीप में? दो इट इन दी सीरियली 5 नंबर में था। माननीय मंत्री दोनों का मंत्री है, राउरकेला स्टील प्लांट का भी मंत्री है, जमीन उनका है, माननीय मंत्री जी, सिविल एविएशन का है। माननीय ये मंत्री इसको जी, क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में मंत्री बताएं। सर, रूरकेला के लिए हमने ये प्रश्न के साथ ताल्लुकात नहीं रखता क्योंकि टिकट प्राइसिंग पर प्रश्न है, पर रूरकेला के लिए हमने प्राथमिकता दी है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं माननीय सदस्य को, जरूर आके मुझे मिलें। इस पर हम जो विकास और प्रगति की हमारी नीति है, इस पर हम लोग जरूर विश्लेषण करेंगे। श्री एन.के. प्रेमचंदन जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. So the answer of the Honourable Minister would goes to shows that Sub-Rule 1 of Rule 135 of the Aircraft Rules 1937, every air transport undertaking engaged in scheduled air service is required to establish tariff having regard to all relevant factors including cost of operation, characteristics of services and generally prevailing tariff. Sir, my simple question to the Honourable Minister is, who is the authority to monitor the tariff making system? Sir, we are having the electricity regulatory mechanism, petroleum sector, in almost all the sectors. In order to determine the tariff, there is a regulatory mechanism is there. What is the reason? Even for motor transport also, the state governments are determining the tariff of the bus fare and all these things. Why a speciality or such a privilege is being provided to the airline sector alone?
There is no monitoring mechanism, nothing is there. And today the माननीय Trivandrum to मंत्री जी, Delhi cost is... Sir, I would like to respond to Premchandan ji by saying that I have said repeatedly on the floor of this House that the civil aviation sector is a deregulated sector. It was deregulated in the year 1993. We do have a tariff monitoring unit which does monitor 60 routes on a random basis. Wherever we find that there is excessive pricing, that has been conveyed to airlines. And I myself, the last time that prices had gone up, there was a double effect. We had a high season in April, May, and unfortunately one of our airlines in our country, Go First, had shut down. So there was a double effect. And I myself had taken a meeting of the airlines for specific sectors like Leh, Mumbai, Ahmedabad, Srinagar, where fares had gone excessive. And we had told the airlines that they must self-regulate. Also, out of the 315 routes that were plied by Go First in those areas, we gave 68 more routes. And within a period of 10 to 15 days, the prices came down, back down to close to 60-70% from the highs that they had gone to. क्वेश्चन नंबर 70 क्लब कर दें माननीय सदस्य मंत्री जी। 70 एक किराए का संबंध आपका नहीं, आपका क्वेश्चन है 70 जो किराए से संबंधित है। क्लब कर दें के सुरेश जी। 70 के सुरेश जी। Question number 70. माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker, sir. My question is, Pravasis of Kerala are suffering extreme difficulties, especially during the holiday season of Christmas, New Year, Onam, Bakrid, and school vacations. Majority of the Gulf passengers traveling from these peak seasons, they are all working class, their salary is very meager salary. So, this is a long pending demand from the Gulf passengers. The peak time of the season, the airfare is going to triple, not only triple, 10 times rising. Okay. So I would like to request Honorable Minister to seriously consider this request from Pravasi Malayalis. Sir, we have 4 airports in Kerala, and I would like to report to this House that all 4 airports have international connectivity at this point of time. Calicut has close to about 416 international flights and connected to multiple cities. So is Kochi, close to about international flights are 564 flights per week, connected to 21 airlines, connected to 16 cities. Kannur also has close to 98 international flights, connected to almost 6 or 7 cities in the Middle East. And Thiruvananthapuram has also close to about 254 flights, connected to almost about 16 or 18 cities across the world. So there is a tremendous amount of connectivity already in Kerala on an international perspective. We have very clearly requested Indian airline companies to increase their travel and their flights from cities in South India to the Middle East based on what Suresh ji has said. And now we are hoping that the airlines will increase their capacity as they increase their fleet. Today we have close to about 635 planes in India in our fleet. As that fleet is increasing with these big orders, I'm very confident in the times to come that Indian Airlines will fly much more to the Middle East.